Yes, we are live. Hello, Mahira. How are you? This is such a live. My trainer was going to come out instantly, say Bismillah, Assalamu alaikum. But I'm toning down. This is a therapy session. How are Uh, you? I'm good. How are you, Urooj? It's so good finally for us to be able to connect face to face and not through I know, and messages. I love that we got to like sneak that 10 minutes before the session. I think it must be a Yes. must, right? To just Yeah. warm up and get on the same page. So the way we find out is that हमें यहाँ पता तो नहीं चलता कि अभी कितने लोग I think हमारा जो ticker है उससे पता चल जाएगा कि लोग आ रहे हैं. People will Hmm. get notified that we are on, and which is why I thought I'll start off with some lighter questions, and Sure. especially questions about. I was curious because you and I went to MBA school together, right? And so we Hmm. did our MBA together, and so we were both business students. Students. I Yeah. mean, it doesn't mean we became business women, but business students. And then you took Mm. this turn into something very, very different, like counseling, Yeah. psychology. And what happened? Did you do it right after it? Did you get married and did you do it? Was there an aha? So tell us about your journey, and which my audience Yeah. will also know about what you do that like that. So I remembered that I was in my final semester of MBA, and I was a finance major. Yeah. And by that time I'd started working. For my MBA. I was also working simultaneously in a nonprofit, not nonprofit, semi-government. I was working in Sindh Education Foundation, Oh, I see that. and Yeah. I remember that there was like, so I've always leaned towards education, so that's always Hmm. been kind of like my passion. And मेरा लास्ट सेमेस्टर था, and I had a job in hand. I had an assistant branch manager position at one of the local bank, not local, some foreign bank. Yeah. And I was like, I can't do this. This is not me. So Wow. I declined the offer after actually that. But the recruiter thought, he was quite upset with me. I was like, I can't do this. Oh. And I went full time into I was doing the work. I was teaching as well. I was doing nonprofit stuff. I started like working consultancy as well. And I was getting a feel of the nonprofit social sector and stuff. And Yeah. around that time, I was also going through some personal things. I was going through a transition in my identity. I was trying to understand myself. Um, and I met my husband during that time. And anybody who's listening knows that our story is a little bit rocky because he belonged to a different community. And so it was little bit of pressure, like, okay, shadi kar rahe ho out of community. It was really stressful time. And around that time, I started exploring um, a, a further master's program. And that's when I came across social work. So I first I applied for the Fulbright grant. Hmm. um, so I applied for that. Complete, like, बिल्कुल seriously नहीं किया था, मैंने ऐसे ही Huh. apply कर दिया था. क्योंकि my husband was also applying for it. I was like, you know what, let's just apply together. And you guys didn't He have any children then? No, we weren't married. We were Oh, you like, weren't married. Okay, you this were is okay. pre-engagement time. This is Oh, okay. Just Rocky getting parents convinced ke shadi kar. So, and then I applied for it and I got the grant. And then I looked at what I wanted to do for a qualification. And I looked at the social work program and I saw that most in the United States, the social work program works in the form that you can actually go and do um, like you can become a clinician, you can become a yeah. therapist. And I was really interested in that. And so that's when I started like researching it. And I went, and it changed my life. This was like 2007. I started my graduate program, Wow. and my focus was in mental health and my interest. Like, so there's mental health, and then there was program development, because while I was really interested in looking at one-to-one work, I'm also big on systems. So my mind Mm, leans towards that. Is like, okay, what's the systemic issue here? How do we address that? nice. And then that it's history since So then. And so you studied counseling, is or what is the exact thing that you studied? it's called social work. So in the US, Social work, it's, yes. yeah. So it's like a social work program, and I went for a master's in social work, and it Yeah. gave me it's like counseling, but it does give you a little bit more scope
in terms of getting an understanding of the social structures, like Yeah. around like, gender, around race, around health. So Yeah. lots of different things. So And from one of the that's top institutes too, definitely. I Yeah. was really lucky to get enrolled in a very good university, and it was great. It was such a great experience, and it really And opened so, up. and you, so did you did that all shadi ho gayi, babies ho gaye, and now, right now, you are practicing in Dubai as a school counselor. That is correct. We Okay. moved, we relocated to Dubai pretty soon after our marriage, like within the first 2 years, 2.5 years. And शादी के बाद हम यहाँ पे आ गए. I was first working in a nursery for like about 4 years, and that was not really counseling. It was more like, again, program level things Yeah. doing for Yeah. nurseries, like education and stuff. But in the past 4 years, I've completely moved into like full-time counseling, working in school. Yeah. Yeah, so that was your journey into the counseling world, and from what I understand is also that so just for everybody who's watching in, Mahira का experience भी social work में है, counseling वो कराती हैं इस वक्त, and she deals with kids. What's the age of the school that? So we're a K to 12 school. So हम लोग छोटे समझे 4-5 साल के age से लेके we go all the way to post 16, so 18-year-olds. I am based in the primary school, so I work predominantly in from समझो 5-year-olds to 11-year-olds. But I do have some more adolescents and teenagers who are on my caseload as well. Yeah. So, so it's the whole gamut. It's तो the whole अच्छा gamut. तो अच्छा मैं because I it's interesting. I always feel very inadequate talking about parenting because I'm not a parent, but I am a therapist. I have studied psychology and all this. So like, and I see nieces and nephews who are between 2 to 14 immediate. So and so I don't know which age is tougher to manage, but I do know, like, as a therapist, that it's this 5 year वाले कितना critical होता है कि इस वक्त लग रहा होता है कि हल्के हैं बच्चे, लेकिन 14-year-old जिसको हमारा, I have a nephew and we call him teenage princess drama queen, shame filled name, but just tease him. But so मुझे बताओ Mahira, so let's jump into our question. We have, I think, friends and family who joined us, and so what are like some of the most, अब जब से ये कोविड हुआ है, I think, like, मीम्स आना शुरू हुए कि पेरेंट्स ने टीचर्स को पैसे ज्यादा देना शुरू कर दिए, और पेरेंट्स को लग पता चल गया कि बच्चे क्या करते हैं, आखिर ट्यूटर्स और टीचर्स और काउंसलर्स इतने पैसे क्यों लेते हैं, so they now have it in. And so with all this, I think, like, we are a resilient race right now, but we've seen really tough times, and I do feel it's tougher for the parents who have kids staying at home, because ना तो वो काम ज़्यादा बढ़ गया है उनका, because there's no end time, no boundaries, basically, right? And then there is the kids. So what are some of the common few issues that you've seen surfacing again and again this time? Yeah, okay. So I would say that it's been different at different points in during these past few months. The common theme is around anxiety, and it's Yeah. like how it shows up, and that is also kind of it's understandable, because if you pick up like globally, the thing that Yeah. mental health disorder jo aapka hai highest is anxiety. And Yeah. even when we work in the school in a non remote learning time, we do data every month, and usme anxiety is high. In the younger kids, it shows up differently. It shows up as attachment. Kids struggle with social anxiety. There is lots of things around performance anxiety as well, which is also something Yeah. that happens in older kids as well. Lekin, the theme is anxiety, and now there's obviously it's also the parents, right? Because they're also Yeah. experiencing this as well. The worry of like, am I doing enough? Am I going to be there enough? Am I? Is it too much? Is it too less? Yeah. How do I take care of myself? So there's a lot of worrying, right? There's constant worrying around that. So that's definitely an emerging theme. There's also the second theme that
we are going to see more of now. Because right now, like, you know, people were on adrenaline, they were trying to get Yeah. stuff done, Yeah. they were trying to figure things out. But now, as things are, now we know that this is a little bit longer, there's Yeah. more permanence in this. There's also grief and loss. So there is like there is grief, like for seniors who are going to be not going to have that opportunity to say goodbye to their, you know, peers. Yeah. There is there's grief. Like I can tell you that my daughter, I have a daughter, she's 9, and you Yeah. can tell, you know, her she's obviously experiencing grief and loss as well because of social, like lack of social interaction with her Yeah. friends, and all the transitional ages, like, you know, kids who are moving from primary to secondary or elementary to like senior school, Yeah. middle school or senior Yeah. school, kids who are moving from college, you know, they're going into college, transitioning into that. There's so Yeah. much, like there is, it's a lot of grief and loss. And I'm also like cognizant, Mahira, and एक तो cognizant of the fact कि हमें मुझे ज़रा उर्दू ज़्यादा बोलनी चाहिए, और दूसरी cognizant से हूँ कि एक ये भी है ना कि जो हमने खुद ही बोला है, मैंने भी बहुत बोला है कि भाई अगर आपके पास जॉब है तो आप बड़े प्रिविलेज हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप कोविड नहीं हुआ है, तो एक तो वो भी. So I am feeling the grief, the loss, the anxiety, and I'm not even Hmm. allowed to lament about it, or I'm not allowed, Yeah. और या फिर सोशल मीडिया पे इतनी मुझ पे प्रेशर है कि मैंने अगर लाइव सेशंस नहीं किए, मैंने अगर कूल कोट्स नहीं डाले, और अगर मैंने एक शेफ नहीं बन गई, तो लाइक यू नो, सो दैट्स देयर प्रेशर टू व्हाट्स दैट लाइक, यू नो, एंड जस्ट Mm. I think you know, you and I, we both talk about Brené, and she's actually in one of her podcasts, उसने इस चीज पे touch up किया. It's called comparative suffering. कि हम एक दूसरे को देख के हम देखते हैं कि ओ कौन ज्यादा इस वक्त, you know, suffer कर रहा है, and who is yeah. most at pain. Wow. And What does this give us? What's yeah, our payoff? हमें क्या मिलता है comparative suffering करके? I think there's a sense of like it can be both ways. It can be like, I should always experience gratefulness, right? मुझे हमेशा Yes. हाँ. grateful होना चाहिए. How dare I have like this moment of grief कि मेरे पास Yeah. खाना है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे हक नहीं हाँ. पहुंचता कि मैं हाँ. नाशुक्री इसके मत बाद बनो. exactly. And then Yeah. there's the other piece is that is the fact कि I am the worst in this situation. मेरी सबसे बुरी like जिंदगी है, मेरी सबसे बुरी circumstances हैं. So the payoff is both feeding into a narrative, right? Yeah. And both It's like two is extremes. दो and एक्सट्रीम है ना, कि या तो मैं बिल्कुल ही बुरी हूँ, या मैं इतनी बुरी क्यों हूँ कि मैं ये फील कर रही हूँ, या कि हाय मैं कितनी नाशुक्र हूँ, like one and of the two. yeah, and both have to do with like self-worth. Yes. हाँ. And both Yeah. points that has to do with self-worth कि आपकी अपनी worth कितनी एक तरीके से attack हो रही है, या you're not good enough, not anything is enough, you know. Yeah. And of course I feel like जब like दो थेरेपिस्ट बात करते हैं तो वो बहुत jargon ही चले जाते हैं, तो मैं इसको simplify करूँगी just so that people are not lost here. और so you said that in the first phase जो कोविड का गुजर रहा था, जब हमें पता नहीं था, एक तो एक्साइटमेंट भी, एक एड्रेनलिन थी, यानी कि जोश था करने का, और अब चीज़ें स्लैक हो रही हैं. आज मैं वो वीडियो देख रही थी एक्ट्रेस की, सुपर है पाकिस्तान की, कि भाई अभी भी जंग चल रही है, डोंट स्लैक ऑफ. एंड आई रियली वांट थॉट जो भी देख रहा है कि प्लीज, it's the second phase is coming, it might be mightier than the first phase, you know, we don't know. लेकिन first phase में, और जो अभी तक चल भी रहा है काफी लोगों के लिए, वो है anxiety. You said that's one recurring theme जो कि आई है. Can you talk a little bit about layman तरीके से anxiety को कैसे समझें, जो देख रहे हैं, और बच्चों में recognize कैसे करें? और अगर आपका कोई सवाल है anxiety related, please this is the time to ask it, ताकि हम उस पर build कर सकें. So, you know, it's a very good question कि ये किस तरीके से manifest करती है, या how does it present itself, कि आप जब आपको कैसे पता है कि आपको anxious feelings हो रही हैं. तो एक तो clinical definition है, एक है कि आपकी racing thoughts होंगी, right? एक होगा कि आपको कुछ लोगों को physiologically
जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हाइटेंड हो जाते हैं, कि वो इंक्रीज हो जाते हैं, कि आपकी जो दिल है वो इट्स बीटिंग फास्टर, या आपको स्वेट ज्यादा हो रहा है, या आपको लेबर्ड ब्रीदिंग है, कि शैलो है, कि यू नो कि यू कैन एक्चुअली फील, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर हैविंग अ हार्ट अटैक, so that's an extreme obviously बट example. पैनिक अटैक, सांस उखड़ रही है, सांस उखड़ सांस रही है, नहीं आ रही, पसीना आ रहा है, that's what you've been saying. Okay. हाँ. Another way of like जो that I feel कि होता है कि is it shows up, होती नहीं है लेकिन it shows up like anger. Interesting. क्योंकि गुस्से के बारे में कहते हैं, देखो anger is a regular feeling, हम सबको होती है, there's nothing wrong with it, it's the way it shows up, right? मगर anger के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि it's an iceberg emotion, कि ऊपर से जो दिखता है एक्चुअली उसको अगर आप डीप करो तो देयर इज a completely different story. तो काफी पेरेंट्स जो गुस्सा करते हैं अपने बच्चों को, या एक शो करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन रेज्ड वॉइसेस, ऊंची आवाज में, या दरवाजे बैंग कर देना, एंड वो लगता एंगर है एक्चुअली, लेकिन if you dig deeper, it's they want to get rid of the feeling of anxiety. Wow. कि वो मेरी बात क्यों sorry, go ahead. कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, या तुम ओबे क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम शोर क्यों मचा रहे हो, या you know that हमारी बॉडी में एक एक्सपीरियंस होती है जिसकी वजह से हम उस पर रिएक्ट करते हैं. we're not aware of it. A lot of people don't have awareness. So to people watching, I want to really clarify कि हम लोग what Mahira is saying कि parents जब बेबसी या गुस्से में या उनको होता है कि क्यों मेरी बात नहीं सुन रहा, तो हम गुस्से में आते हैं, लेकिन उनको ये ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, वो अपनी एंजाइटी से एक तरह से बिल्कुल लाइक बेनियाज होते हैं, दे डोंट नो इट्स हैपनिंग. क्योंकि यूजुअली कब हम लोग गुस्सा एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारे सेंटिमेंट्स या हमारे एहसासों को समझता नहीं है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो, राइट? लेकिन एक्चुअली अगर उसको आप डिग डीप करें तो इट्स गॉट मोर टू डू कि अगर वो नहीं सुनेगा तो क्या हो जाएगा, and that's for anything that's forward facing and that's worrying about the future is linked to your anxiety. Wow, okay. So यानी कि, और अगर तुमने फॉरवर्ड फेसिंग का मतलब ये कि यानी कि अगर आप फ्यूचर को, मुस्तकबिल को लेके परेशान होते हैं तो वो एंजाइटी है, और अगर आप पास्ट को लेके परेशान होते हैं तो डिप्रेशन. Oh, it's such a beautiful way to explain it. यानी कि अगर आप माजी में फंसे हुए हैं और काश ये हो जाता, ये मुझसे क्यों हो गया, तो वो आप मोस्ट लाइकली डिप्रेशन के साइंस शो कर रहे हैं. लेकिन अगर आप आने वाले कल को लेकर परेशान हैं तो वो एंजाइटी है. ब्यूटीफुल. एंड देन ऑफ कोर्स माया, हम इन बच्चों पे बार बार आ रहे हैं, लेकिन इट सीम्स लाइक जो सॉल्यूशंस हैं वो बड़ों के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं, राइट? प्रेजेंटेड सिम्टम्स भी वही हैं. सो हाउ डू वी टीच kids and adults to deal with this anxiety, fear? देखो, I will tell you one thing about kids, okay? And it's a very ये phrase बहुत commonly कहा जाता है. It's been said too much actually कि children are like sponges and they will do as you model behavior to them. तो most often than not, young children, and I'm talking about बिल्कुल समझो 3 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं, जो टॉडलर से प्री स्कूल के एज में आ रहे होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिकली एंजाइटी बहुत कम होती है. यूजुअली इट इज पेरेंट प्रोजेक्शन. यानी कि बच्चा खुद जो 3 साल का होता है उसमें एंजाइटी का कोई नेचुरल नहीं होता, कि बच्चे को खुद ब खुद एंजाइटी नहीं होती, वो माँ बाप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. और ठीक है, मोस्ट केसेस इट्स वेरी, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कि इट्स ऑर्गेनिक, कि एक्चुअली कोई एंजाइटी इशू है, क्योंकि इतने यंग एज पे आप एक्चुअली डायग्नोज भी नहीं कर सकते हैं. वरी इज नेचुरल,
फिक्र करना इज अ वेरी नेचुरल फंक्शन, उसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, इट्स अ ह्यूमन एक्सपीरियंस कि आप एक लाइक एज अ इंसान होने के नाते आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि मैं किसी चीज के बारे में फिक्र करूं, एंड एक्चुअली देयर इज अ वैल्यू टू इट कि अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं जो सारे काम करने होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, एंड उसी तरीके से बच्चों के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन जो आप हाइटेंड लेवल देखते हो ना, जो हाइटेंड लेवल ऑफ वरी के मतलब स्पेशली मेरा आई हैव अ 5.5 year old, मेरा एक बेटा है, और मैं उसमें देखती हूँ कि उसकी जो वरीज है अराउंड परफॉर्मेंस, कि उसको हर दफा जीतना है, उसको हर दफा अच्छा करना है, और उसका एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है, एंड कुछ उसका अपना है, उसमें अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन अ लॉट ऑफ हैज टू डू विद हाई फंक्शनिंग पेरेंट्स, हाई परफॉर्मिंग पेरेंट्स जो होते हैं ना, and myself और मेरे जो हस्बैंड है, we're both very high functioning parents, हम लोग हमेशा I चाहते हैं कि want you to चीजें sort of open up this high functioning, because I feel like not everybody understands कि ये कौन होते हैं ये high functioning parents. कि टाइम पे सब चीजें हों, आपका स्केड्यूल्ड हो कि आपको स्विमिंग पे भी जाना है, और आपको अपना जो होमवर्क है वो एक परफेक्ट लेवल, हाई आपकी एक हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, और रिस्पेक्टफुल, हमेशा जो है बड़ों से मिलो, अच्छे से मिलो, सलाम करो, these are all high expectations, and it's nothing, It's so and again interesting, Maya, you're saying it, and I'm thinking, ये तो सारे मेरे इर्द गिर्द माँ बाप यही करते हैं. Like, so like, are we as a society like, हमने ऐसा सोसाइटी सीख लिया कि हमें हाई फंक्शनिंग होना है, या पेरेंट्स होते ही आपको लगता है कि आपको तो बेस्ट पेरेंट होना है, बच्चे को, जैसे हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं, उर्दू भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, अरबी भी आना चाहिए, फ्रेंच भी आना चाहिए, लाइक सब कुछ करना चाहिए, और अगर हम इससे कम कर रहे हैं तो हम तो बड़े लूजर माँ बाप हैं यार कि हम बच्चे को नहीं करा रहे. सो टॉक मोर अबाउट दिस. हाई एक्सपेक्टेशंस होना इज नॉट अ बैड थिंग, और आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप अपने बच्चे को जितना चीज एक्सपीरियंस दे सकते हो आप दो, लेकिन जहां पे आपने नोटिस किया कि आपका बच्चा बहुत रेजिस्ट कर रहा है, या आपने नोटिस किया कि उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, देन समथिंग्स गॉट टू गिव. आपको अपना या तो रूटीन चेंज करना है, या आपका पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. तो जहां आपने देखा कि आपका बहुत ओवर स्केड्यूल्ड रूटीन है, एंड आप नोटिस करते हो कि बच्चा वाइन कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, हर मोमेंट पे ये कर रहा है, उस वक्त आपको यू हैव टू टेक स्टॉक एंड यू हैव टू से ओके, मुझे कुछ चीजें चेंज, एक तो आई हैव टू हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन कि मैं अगर वो बच्चा इतना कम्युनिकेशन कर सकता है, आप उसके साथ बैठ के बात करो कि मैंने ये चीज नोटिस की है, विदाउट अ ब्लेम एंड शेम एटीट्यूड. ये क्या होता है ब्लेम शेम एटीट्यूड होगा, तुम हमेशा यही करते हो, तुम तो हर चीज के बारे में यही बात करते हो, तुम्हें किसी भी चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तुम इस चीज you're going in loaded, आप अपने assumptions को पहले ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो बच्चा क्यों ओपनली अपनी बात करेगा. तो you go in with language like I saw Anjum's message, sorry I got a little distracted there. Thank you Anjum. नहीं, लेकिन you go in with blame gentle, shame. हाँ कि आप जेंटली जाओ, कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करो. मैंने एक दफा एक फ्रेज सुना था कि इट्स ओके कि पेरेंट्स भी, इट्स ओके टू गेट एंग्री, लेकिन व्हेन यू गो इन सॉफ्टन, अपने आप को सॉफ्ट करो, टोन कम कर लो, आवाज थोड़ी नीचे कर लो, और अब मैं आपको ये सब बातें करूँ, इसका ये नहीं मतलब कि मैं 100% इन चीजों को फॉलो थ्रू करती हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. तो ये हम तुम्हारी 9 साल वाली को लेके आएंगे तो वो बताएगी. And I will tell you this कि आज शाम मेरा complete meltdown हुआ है मेरे बच्चों के साथ, and then I apologized, and then I went. But the point is कि awareness होनी चाहिए, communication होनी चाहिए, और एक certain principles होने चाहिए कि ये boundary मैं cross नहीं करना चाहती. So you said, I'm putting it down, awareness, और क्या? Principles के जैसे कि आपकी principles और and boundaries. Something else before awareness, boundaries. Awareness, communication and boundaries, I think. Yeah. क्योंकि you don't want to cross certain things. जैसे हम लोग के घर में हम लोग language, जैसे a big boundary for me is language. ठीक है? When I say language, I mean गाली गलौज.
It's unacceptable in our house. Yeah. And how we communicate. So it's a value that we have, and that's a boundary we will not cross ever. Yeah, yeah. So you got to be aware of things. You got to communicate nicely, and communication के अंदर जैसे आपने sorry करने की बात की, और I think that's something I definitely want to build upon कि माँ बाप बच्चों से sorry, और ये how does this figure out. मैं ब्रेने का भी वो सुन रही थी हैरियट लर्नर के साथ, तो वो यही कह रही थी कि like sorry और क्या, so that I want to take, I'm taking notes and I want to talk about boundaries. So I know हमारी conversation काफी इधर उधर चली जाती है, हमने कहा बड़ा streamline करके, लेकिन ये है ही topic इस तरह का कि it's amazing. So tell me कि you said sorry to your kids क्योंकि तुमने आज बच्चों के साथ meltdown हो गया, तो उसके बाद what is Yeah. it like for parents to say sorry? Is it a good thing, bad thing? How should we say sorry? So I'm going to go back to modeling. ठीक है, अगर हम Yeah. चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा anxious ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा रिस्क टेकर हो, अगर हम सब ये चीज़ें चाहते हैं, तो हमें मॉडल करने पड़ेगी. एंड अपॉलजी एंड सीकिंग दैट इज पार्ट ऑफ दैट. कि अगर हम नहीं शो करेंगे कि मुश्किल होता है कभी कभार करना, पर अगर आपसे गलती हो गई है, इट्स ओके. एंड मेरी एक काउंसलर थी, शी इज मूव बैक टू द यूएस, एंड उसने मुझे एक फ्रेज बोली थी जो मुझे बहुत लाइक इट्स रियली स्टक विथ मी, एंड it said was, you simply begin again. Okay, beautiful. And in the context of apologies or generally? In generally, so even with apologies, it's like कि अगर आपने गलती की है, आप जाके apologize करके go back to the start. Yeah, yeah. Lekin I don't know. I want to be the devil here and say कि clearly they didn't block him enough, but but ये जो माँ बाप की अना आती है, like, और कि कि मेरा तो वो टाका कम हो जाएगा, मैंने, क्योंकि सॉरी करने वाला तो छोटा हो जाता है. एंड तो ये तो अच्छी किताबों में लगती हैं बातें कि सॉरी से बड़ा लगता है, लेकिन जब एक्चुअली आपको सॉरी करना हो, मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि द जेन्युइन सॉरी इज सो टफ टू मेक. इट्स लाइक व्हेन यू रियली, आई मीन इट्स इजी टू से सॉरी, और ये जैसे वो थप्पड़ मूवी में था कि यू कैन ब्रिंग अ डायमंड ब्रेसलेट एंड दैट्स योर वे टू से सॉरी. बट लेट्स, I want, can you talk a little bit about genuine sorries, and the format, किस जबान में क्या लफ्ज होने चाहिए सॉरी के? Here, the thing is that जब आप नहीं apologize कर रहे होते हो ना, जब आप hold कर रहे होते हो अपनी position, उसमें आपकी एक तो बहुत energy जा रही होती है, because you're constantly trying to maintain a certain stance. Yeah. When you're doing it with peers, and if you need to take that position because of power and all that different thing, that's a different situation. लेकिन आपके बच्चे के साथ ऑलरेडी आपका मोस्ट, मैं जिन बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं टीनेजर्स में अभी नहीं जा रही. आई एम टॉक इवन दो टीनेजर्स के साथ भी इट्स एब्सोल्युटली समथिंग वी शुड एक्सप्लोर. लेकिन जो बच्चे हैं जो यंगर हैं, अंडर 10s हैं जिनको आप कह दो, ठीक है, उनके साथ जब आपका पावर डायनामिक जो होता है ना, इट्स established. You are the person in position of power and authority. तो अगर आप like those kids who feel like they come across as like throwing tantrums, and technically माँ बाप को लग रहा होता है तो मुझे नचाता है, ये तो मैं इसके, आप अपनी हर चीज उसके इर्द गिर्द करते हैं, तो ये उनको ये जो you're saying that it's known के who's the boss in the house, like is it like, how do we establish that? It's the narrative. Like if you're talking about an environment जहाँ पे parents are struggling with disciplining their children, and वहाँ पर आपका एक power struggle चल रहा है, तो it is you as a parent, because आप adult हो, आप decide करो कि मैं इस power struggle में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा. Okay, very good. So if your 4-year-old is on the floor and having a tantrum, it is your prerogative at that time कि वो आप उसको छोड़ दो, आप पीछे हट जाओ, या फिर आप उसमें घुस के उसको ड्रैग करो या उसको डांटो, और वो you are in a position of making that choice. वो बच्चा is not in a position of making that choice, because that's what power is. Power is about choices.
तो Yeah. अगर हम ये कहते हैं कि बिकॉज वो 4-5 साल का बच्चा जब वो अपने टैंट्रम में जाता है उसको एक्चुअली चॉइस नहीं होती, क्योंकि पीपल साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली उन्होंने रिसर्च किया और देखा है कि जो बच्चे का जो आई थिंक इट्स कॉल्ड द अमिगडाला, Yeah, amygdala. Yeah. वो इट्स एक्चुअली इट्स फ्लिप्ड द लिड. तो Ah, उनकी ब्रेन स्कैन्स और पीपल विथ हाई लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनकी ब्रेन स्कैन्स में कोई फर्क नहीं होता एट दैट पॉइंट. wow. So यानी कि जो बच्चा टेंट्रम कर रहा है ये उसके बस में नहीं है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए, बिकॉज अमिगडाला हमारे अंदर एक it's basically an ancient brain. It's like it's the part which is उसको बनाया है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कि उसको जब लगे कि खतरा है तो वो धड़ करके फट पड़ता है. So it's no longer in your, it's like a blast has gone up, it's not in your hands. मगर किसके हाथ में? आपके हाथ में, क्योंकि आप पेरेंट है. और अगर आप ही कह रही हैं कि अगर आप पढ़ेंगे, उससे आप रीजन कर रहे हैं, या आप उस रीजन तो नहीं, आपको डांट रहे हैं, आपके लेट मी शो यू, लेट मी डू दैट, तो आप इंगेज कर रहे हैं, आप उसको और खिचड़ी बना रहे हैं. एट दैट पॉइंट तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको बस छोड़ के अलग हो जाना चाहिए. जहां आप नोटिस करते हैं कि उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, वो विम्परिंग में आ रहा है, Yeah. वो जो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, हाँ, उस वक्त हाँ. आप जाके उसको कह सकते हो कि व्हेन यू आर रेडी टू टॉक, मामा विल टॉक टू यू और बाबा विल टॉक टू यू. बट you're giving Go the ahead. choice to them. So it's almost like आपको उसकी बेबसी से निकाल के कह रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो. You have a choice, which I've seen some great parents do. You have a choice. What do you want to do? And I think, और ये इसके ऊपर भी I think ये बहुत excellent language है, right? To use with kids, to give them the illusion of a choice, कि तुम आप जब तुम आना चाहो तो आ सकते. And what about then ये time out, और या उसको cuddle करें, या उसको like unconditional love कैसे दिखाएं हम, और हम obviously under 5ish guys के बारे में बात कर रहे हैं. अगेन वही चीज आ जाती है उरूज, कि अगर आप गुस्सा अगर दिखा भी रहे हो किसी को, इसका ये नहीं मतलब, बट इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब कि आप अपना लव विड्रॉ करो. बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि इट्स ईदर और. You can have both. आप गुस्सा शो कर सकते हो, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप अपना लव विड्रॉ करो. बिकॉज अदरवाइज आप क्या कंडीशन ये सेट कर रहे हो कि मैं सिर्फ आपको उस वक्त प्यार दूंगा, या मैं उस वक्त आपको पसंद करूंगा जब आप वो करोगे जो मैं चाहती हूँ. एंड दैट्स व्हेन ऑल दैट इशू ऑफ वो शुरू हो जाता है. फिर गेनिंग अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नहीं होता. फिर वो बचपन में वो आपसे सीख करते हैं, फिर उसके बाद वो पियर्स में एंटर करते हैं, फिर वो उनसे सीख करते हैं, फिर जब वो पियर्स से निकल के एडल्टहुड में आते हैं तो फिर वो अपने इर्द गिर्द लोगों से सीख करते हैं. तो इट्स द साइकिल. You are saying that you have to, आप डिसिप्लिन तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को कभी ये एहसास नहीं करें कि मोहब्बत आपकी कम हुई है. तो आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं छोटे बच्चे के साथ भी, और आप उसको चॉइसेस दे रहे हैं कि जब तुम तैयार हो जाओ, और आप इंगेज नहीं कर रहे जब वो बहुत हाइपर हुआ है, तो यू गॉट लेट देम बी अ लिटिल बिट. When you have established those things, right? When you've established that kind of relationship, फिर sorry कहना मुश्किल नहीं लगता. Yeah. And then and my mother came in right now and she said कि sorry के साथ thank you भी. So what do you think of that? She was like, when they do follow on the choice, then it's time to say kind of like give them the positive recognition. Absolutely, 100%. अगर हम लोग सारा वक्त इस चीज को उछलते रहते हैं कि ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन हम खुश ग्रेटिट्यूड नहीं शो करेंगे, तो फिर मतलब इतना ग्रज, इतनी जंग सी होने लगती है ना, कि ईगोस की भी जंग हो रही होती है ना, कि थैंक यू कैसे बोलेगा इंसान. तो या इंस्टेड आई फील लाइक वी में से पेरेंट्स माइट से, देखा बोला था ना, चोट लग गई ना, आई टोल्ड यू, मामा सेड सो, लाइक और मत करो, अम्मा की बात मानो, एंड अगेन having said that, ऐसा नहीं है कि I have not fallen in that trap, क्योंकि हम लोग सब human हैं, बिल्कुल. It's not a position of judgment. It's just a position of awareness and knowing कि कब आप कर रहे हो, and then you can step back out of it. कि अगर आपने notice किया कि this has happened to me,
कि मैं इस डायनामिक और इस कॉन्वर्जेशन में घुस रही हूँ कि मैं उसको कह रही हूँ अच्छा तुमने देखा मैंने तुम्हें बोला था, एंड यू गेटिंग इनटू द ब्लेम एंड शेम. तो दैट फॉर मी दैट्स अ सिग्नल कि देयर इज समथिंग एम्प्टी इन मी, कि मेरे Yeah. रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, कि मुझे अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करना है. Beautiful. And Maya, तो मॉडलिंग की बात कर रही हो because you're constantly showing that आप माँ बाप अपना समझें कि अगर मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, मैं चीखे जा रही हूँ, मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, तो फिर प्लीज लुक इनसाइड कि एज अ पेरेंट, स्पेशली अंडर लाइक दिस 5-6 साल के बच्चे का पेरेंट, जिस क्लियरली यू सेड इवन until 9-10 that you Hmm. are the power is pretty established कि आपकी चलेगी घर में. और अगर इस वक्त आप नहीं कर पा रहे तो फिर आप खुद अपने अंदर देखिए कि कहाँ पर आप कमी है. What is it that you need? Maybe it's too much for you, and what do you need? Instead of trying to Absolutely. get it from the kid, or because in getting it from the kid, you're teaching the kid that the kid has to make you happy. Hmm. Yeah. एंड आई रिमेंबर हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत अमेजिंग टॉक हुई थी, और उसमें तुमने एक बात बताई थी कि मॉडलिंग करने पे एनजाइटी पे यू हैड सेड, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, कि इस वक्त एनजाइटी इतना है और हम जिस तरह डील कर रहे हैं इस फियर से, तो बच्चे को हम ये दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी भी फियर होगा, एनजाइटी होगा, तो हमने क्या करना है. तो Hmm. वो भी लाइक सो गोइंग बैक टू कोविड एंड अनसर्टेनिटी एंड किससे मिलो किससे नहीं मिलो, क्या करो नहीं करो, तो इसमें माँ बाप की हालत खुद टाइट है जब, तो वो बच्चे Hmm. को कैसे मॉडल करें, एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है. देखो एक तो फसाड्स और मास्क अभी रखना इज हार्ड. दिस इज द टाइम कि जब आप बेसिकली यू नीड टू बी रियली ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स. Yeah. अगर आप प्रिटेंड करोगे कि यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, एंड यू Yeah. रियली आर, इफ इट्स कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे आपकी बिल्कुल डिप्लीट हो रही हैं सेल्फ रिसोर्सेज एंड ऑल, तो देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ. तो इसमें जो है द टूल दैट इज नीडेड, द स्किल दैट इज नीडेड इज इमोशनल वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. कपल ऑफ थिंग्स इसके फीलिंग्स की हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है. जो फीलिंग्स जो होती हैं, जो हम महसूस करते हैं, डिफरेंट एहसास, जैसे गुस्सा हो गया या ग्रीफ या सैडनेस हो गई, उदासी हो गई, ये सब चीजें जो है ये नेचुरल हैं. और हम लोग ये समझते हैं कि हमें इन पे कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअली आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपको वेरी लिटिल यू हैव कंट्रोल ओवर दैम. Yeah. एंड मैं हमेशा जो है ना, आई गिव एन एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को एंड टू द पेरेंट्स कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो एहसासात हैं, वो बिल्कुल मौसम की तरह हैं. वो आते हैं और Interesting. फिर चले जाते हैं. इट्स लाइक द वेदर. Yeah. द तो क्लाउड्स आप कम एंड उसको दे गो. जैसे आप क्लाउड को रोक नहीं सकते, आप अपने एहसासात को रोक नहीं सकते. एंड दैट्स व्हाई जब वो आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करो और उनको वेलकम करो और उनको कम्युनिकेट करो. जब आप मिनट उनको स्टार्ट लैंग्वेज और उनको कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हो, तो फिर उसके बाद होता है कि ओके दिस इज ओके. Yeah. तो इफ मुझे हाँ, बहुत नहीं बोलो. अगर मुझे उदासी महसूस हो रही है, तो इट्स ओके कि आप अपने बच्चों के सामने बोलो कि टुडे आई फील सैड. Wow, okay. And you don't have to worry कि आपका बच्चा भी सैड हो जाएगा because मामा सैड है. नो, मतलब कि देखो, there will be a conversation that happens that needs to be an intelligent conversation, but it's Yeah. also showing कि you're giving permission to your child कि जब Yeah. उनकी actual difficult feelings होंगी कि वो आपसे आके उन चीज के बारे में बात करें, because it's again modeling. तो Yeah. अगर if I'm worried right now, I mean it has to be age appropriate, of course. Yeah. The conversation has to be age appropriate. लेकिन अगर for example मुझे worry है about COVID, and I know my child is also worried about it, then I have an Yeah. open and transparent age appropriate conversation about it. How would, for example, if you have a 9-year-old, how would you have the conversation with your 9-year-old? So I'll give you an example, and I haven't Yeah. taken permission from her for sharing this, but I'll share it. I hope she doesn't mind. लेकिन a few weeks ago, my daughter had a meltdown. She actually said
अच्छा मैं आपको ज़ारा की पर्सनालिटी के बारे में बताऊं कि वो ऐसी बच्ची है जो who gets on with things, और उसका वही she's got like that mindset कि मुझे I have to show myself as being presentable and all that kind of stuff. वो hold बहुत करती है अपने feelings, ठीक है, वो hold on करती है, and probably that's because of that's how I am also, and I'm still unlearning that. तो one day she completely had a meltdown. उसने कहा कि मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है, मुझे कोविड से नफरत है, ये हमारी जिंदगी में क्यों आया, you know, she just completely. तो I held her that space for her. मैंने उसको validate किया, मैंने कहा it is hard. Mama also finds it hard. You are right. तो आप उस वक्त ये ना करो कि उसको बोलो नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं होता, ये सब बातें at that point in time जेब नहीं देती. You hold that space. You empathize. आप empathy में reach out करो, आप उसको validate करो, आप उसको बताओ कि वाकई जो तुम महसूस कर रही हो वो actually true है. Wow, yeah. क्योंकि फिर क्या होता है कि आप वो share कर रहे होते हो feeling, right? Yeah. So that's so important. हमने कहा कि empathy यानी कि उस जो वो महसूस कर रहा है आपका बच्चा, आप उसको महसूस करें, उसको validate करें, ताकि उसको मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप उसके ऊपर आप डाल दें गुस्से की तीर चलाना शुरू हो जाएं कि फिर वो कहे कि यार मैं तो मामा से जिंदगी में कभी कोई बात ही नहीं करूंगा एंड आई विल फील लाइक अनहर्ड अनसीन, और वो जो मेरे अंदर है इशू वो तो उबल रहा है और उबल रहा है. मगर व्हेन यू वैलिडेट इट एंड व्हेन यू से आई सी यू एंड आई एम विथ यू, तो फिर आप उसके गुस्से को या गुस्सा एंजाइटी फियर को चैनल करके एक तरह से रूम वेंट क्रिएट कर देते, राइट, फॉर इट टू sort of come down. And also because जब हम शेयर करते हैं, जब आपके पास एक लिसनिंग ईयर होता है ना, जब आप एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, आप अपने आप को सोचो, think back to a time जब बहुत टफ था और जब आपको किसी से बात करनी थी और आपने किसी से बात की और उस बंदे ने आपकी बात को सुना और महसूस किया आपके साथ और आपको एक्नॉलेज किया और वैलिडेट किया, वो फिर because the act in itself वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फीलिंग का जो इम्पैक्ट होता है ना वो कम हो जाता है, वो हमारे अंदर नहीं रहती, फिर वो शेयर हो जाती है. वो जब शेयर हो जाती है तो फिर वो एक तरीके से नदी की तरह बह जाती है. Yeah. I like to say to my clients, I said you feel and that's how you heal. You know, you feel, you heal, and for those people who stay in their head, that's how you deal. Feel, heal, deal. And आप feel नहीं करेंगे अपने जज्बात और किसी और को, और जब आप अपने बच्चे को वो कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, तो वो कैसे फील करेगा अपनी फीलिंग्स. So you've got to feel, you know what you go through all these different things. That's beautiful. And because what you're doing is like you're creating a partnership then. You're no longer the authority. है आपकी position of authority अभी भी है, लेकिन in that moment आपने एक partnership create की. And then उसके बाद I shared with her, I said कि you know, I hear what you're saying, Zara. कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसा फील हुआ था और मामा भी बहुत रोई थी. Wow. So you made it okay for her to feel it. Yeah. And then the age appropriate bit is, what can I do? So what do I offer in that moment? I told her, Mama is trying to find ways. Mama कोशिश कर रही है कि कोई ऐसी चीजें करें कि दिल बहलाने के लिए, कि मुझे शायद उस वक्त I needed to talk to a friend. I needed to talk to someone. या मुझे उस वक्त art, like she's interested in art. So do you think that's something you can do to help yourself? And I'm also trying to cultivate in my children mindfulness. And जो concept है of कि आप, क्योंकि at this point in time, because हम लोग सब forward thinking है, हम future के बारे में सोच रहे हैं, हमें अपनी जो सारी attention है वो वापस लानी है present में. Beautiful. Yeah. So first you empathize with her, और तुमने कहा कि हाँ तुम जो फील कर रही हो मैं समझ रही हूँ, ये बहुत कोविड गंदी चीज़ है, ख़राब है. Then you said कि मैं खुद भी फील करती हूँ. You disclosed अपने आप को, vulnerability, you opened up ताकि वो देख सके कि वो अकेली नहीं है. And then age appropriate response कि आप क्या कर सकते हैं. मामा कोशिश कर रही हैं, आप बताएं कि आप क्या कर सकती हैं, क्या आप पेंट कर सकती हैं, क्या आप मतलब what can you. So again bringing her to the choice. You have spoken before as well, Mahira, कि बच्चे को choice देना सीखें कि वो फिर decide करे कि उसको क्या करना है.
एंड देन उसके Yeah. बाद जो है ना, फिर देन यू कैन कीप चेकिंग इन ऑन द चाइल्ड, यू नो, कि अगर आपने नोटिस किया उसका, फिर आप मूड डिसाइड कर चेक कर लो कि कैसा फील कर रही है, एंड उसको लैंग्वेज दो कि हाँ. क्या महसूस कर रही हूँ, बॉडी में क्या महसूस कर रही हूँ, कैसी फीलिंग्स आती हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि Yeah. इतने मुख्तलिफ तरीके हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बच्चों को वो देने होते हैं, उनको लैंग्वेज देनी होती है, उनको वर्ड्स हाँ. देने होते हैं। और अगर हमें खुद ही नहीं पता होता ना कि अच्छा गुड फाइन के बियॉन्ड कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो हम कैसे ये वर्ड्स देंगे? रैंडम ऑब्वियसली तुम्हारी बात से, हर बात से मुझे कुछ आता है, और टू दोज हु आर वाचिंग, क्या कुछ मे बी गिव मी शेयर अ टिप कि ये इमोशनल वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए घर के अंदर? मैंने एक पेरेंटिंग कोर्स एक दफ़ा अटेंड किया था, एंड उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा टिप बताया था कि हमारे पास फोन्स हैं, राइट, हमारे पास कैमरास हैं, हम सब लोगों को बोलें कि अपनी तस्वीरें, जब बच्चे जो है अगर उनके पास डिवाइसेस हैं या अपना फोन दे दें, वो अपनी तस्वीरें लें 6-7 रेंज ऑफ इमोशंस की। यूजुअली होते हैं हैप्पी, सैड, मैड, ग्लैड, फ्रस्ट्रेटेड, जो भी जब आते हैं आपको, जो भी आपके वर्ड्स हैं आपके पास ऑलरेडी, उसकी Yeah. आप तस्वीरें लें, और फिर आप एक दूसरे को दिखाएं एंड पूछें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास वो तस्वीर है ना, आपने अपनी तस्वीर ली और आपने दिखाया अपने बच्चों को कि जब मैं गुस्से में होती हूँ मैं ऐसी होती हूँ, तो आपका बच्चा आपको फौरन कहेगा कि मामा एक्चुअली आप ऐसी नहीं होती हैं, आपकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट होती है। Wow, That's I when you love are it. you're raising awareness of the non-verbal vocabulary. ठीक है, एक तो Yeah. क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो है 20% वर्बल है, अभी Yeah. सबसे ज्यादा हम लोग इसलिए हिट हुए हैं, इसके हमारी एक तो सोशल इंटरेक्शंस कम हो गई हैं, लेकिन हम हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो नॉन वर्बल इंटरेक्शंस का, दैट इज Yeah. बिन अफेक्टेड। Yeah. Yeah. So, सलीना ने भी यही सवाल पूछा था कि हाउ डू वी गिव लैंग्वेज टू चिल्ड्रन, गिव प्लीज गिव एग्जांपल्स। तो एक तो ये अभी माहिरा ने ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी बताई है, एंड आई हैव डन दिस एज अ ट्रेनर इन विद अडल्ट्स, बट इट्स सो अमेजिंग कि बच्चों में और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आप ये करें। सो कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स, एनीथिंग एल्स दैट टू लाइक लैंग्वेज, बच्चों को जनरली लैंग्वेज देने के बारे में, क्या फील कर रही हूँ मैं, क्या है There is चेक lots of इन things on, वाला? there are lots of things online. एक मैंने ढूंढा था, it was called the feelings bingo card. Oh, ठीक है, nice. Let me write तो this down. उसमें क्या होता है कि आप सबको जो है बिंगो कार्ड बनाते हो, उसमें 6-8 बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ फीलिंग्स डाल दो, एंड आप द पर्सन हु इज कॉलिंग आउट द नेम्स, वो फिर वो नेम्स, वो इट बिकम्स अ फन गेम कि Yeah, yeah, फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट, सिली, अनॉयड, ये सब, फिर it becomes part of the, when it becomes part of play, yeah. then automatically आपके बच्चों की इमोशनल वोकैबुलरी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि it's no longer a monster, right? It's no longer a who, it's no longer a taboo. कोई बुरी बात नहीं है बात करना, तो you know the word depressed will not be so big and sad or angry or ashamed, or because then you know आपने उसके बारे में बात की हुई है, हमें तो मानूस है हम उससे, like I tell people, like you know the devil we know is not so scary, you know, No, versus the no, devil we don't know. you don't know. So Yeah. so like that's beautiful. And मैं अपनी थॉट्स को कलेक्ट कर रही हूँ कि और क्या क्या मुझे आपसे पूछना था। हाँ, तो इसके बाद इमोशनल वोकैबुलरी के साथ ही मायरा, यू हैड सेड बाउंड्रीज, बाउंड्री सेट करना। तो आई नो कि हम ऑब्वियसली 48 मिनट्स पे बैठे हुए हैं, वी डोंट हैव अ लॉट टाइम, मगर जस्ट लाइक लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइक बाउंड्रीज क्या होती हैं, और हम घर में अपने बच्चों के साथ कैसे सेट कर सकते हैं? देखो, बाउंड्री सेटिंग से पहले जो स्टेप है ना, इज वैल्यूज। ओके। कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी अबाउट कि आप वैल्यूज से मुराद ये है कि वो चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, या कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पे आना is a very big value for some people. या You know, so it's a conversation to be had in the family कि क्या चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और या यंग बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जो मैं करती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, एंड वी haven't touched upon teenagers in this session, लेकिन यंग बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, you get them to make a house.
Okay. ठीक है, आपका घर, एंड देन उसके बाद उसके प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि इस घर में क्या चीजें आ सकती है, किन Yes. चीजों की परमिशन है, किन Yeah. चीजों की परमिशन नहीं है। और हर बंदा अपना घर बनाता है और फिर वो आके कंपेयर करता है कि मेरे घर में जो है हम सिली टाइम भी कर सकते हैं, मेरे घर में जो है अगर किसी का अच्छा ग्रेड नहीं आया लेकिन किसी और का अच्छा ग्रेड आया है, तो जिसका अच्छा Yeah. ग्रेड आया है हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, उसको श्रिंक नहीं करेंगे, लेकिन जिसका बुरा ग्रेड आया उसको भी हम उसके साथ भी हम एम्पथाइज करेंगे। Yeah. तो ये एक आपकी फिर एक अंडरस्टैंडिंग सेट हो रही होती है। Yeah. एंड नेचुरली जब आप वैल्यू वर्क करते हो ना, उसमें आपकी हाँ. बाउंड्री सेट हो जाती है। तो Hmm. फॉर एग्जाम्पल फॉर सम चिल्ड्रन उनको नेम कॉलिंग नहीं अच्छी लगती है, या सम बच्चों वो व्हाट दे डोंट गिव परमिशन फॉर इज कि उनको पब्लिकली शेम करना है, कि माँ I mean, I बाप guess कभी like a night. पब्लिक, I hope लेकिन nobody likes ले, that. लेकिन एक जब एक आप चीज एक बच्चा खुद कम्युनिकेट कर लेता है ना, हाँ. उसके बाद देन दैट स्टेज विथ यू। Okay. So. एंड मैं आपको बताऊं, ये वैल्यू हाँ. वर्क मैंने रूज मैंने अपने बेटे के साथ किया था व्हेन ही वाज 2.5। I was just going to come to that question. Mahira, मैं सुन रही हूँ ना, and I'm thinking, a kid who's like 9 साल का हो गया है, तो उसके लिए अचानक अगर ये बात हो कि, तो वो तो बहुत रेजिस्ट करेगा, बिकॉज आपने बचपन से कभी किया नहीं मेरे साथ ऐसी बातें, और अचानक आप इमोशंस के बारे में। सो इज देयर अ वे कि अगर आपने ये विंडो, बिकॉज आज का हमारा सेशन जनरली अंडर 6-5 के लिए हुआ है, मगर इज देयर अ विंडो कि अगर ये क्रॉस हो गई और आपने कभी कभी इमोशंस के बारे में, वैल्यूज के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में कभी गुफ्तगू नहीं की, तो is there a way to do it later at like थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तब भी? देखो द थिंग इज दैट ऑल दिस वर्क इज एन अजम्पशन कि आपकी एक रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ। Yeah. तो बिफोर ऑल ऑफ दिस यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप, एंड टू हैव अ रिलेशनशिप यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। और मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अक्सर मेरे पास पेरेंट्स स्कूल में भी जो आते हैं, हाँ. वो अपने जब कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि बच्चा हमारा बात नहीं सुन रहा, हमारी वो नहीं कर रहा, तो मैं उनसे बात कहती हूँ कि आपने आपके और आपके बच्चे की रिलेशनशिप क्या है। कहते हैं हम बात करते हैं, हम स्पेंड टाइम करते हैं टुगेदर। मैंने कहा बट कॉन्वर्जेशन इज टू वे, Yeah. एंड कॉन्वर्जेशन इज नॉट इंस्ट्रक्शंस। Yes. So true. Because आप अगर उसको बता रहे लंच खा लेना, आज ये होगा, आज वो होगा, that's not a conversation. That's not a conversation, that is a briefing. Yes, exactly. I know. So That is a you gotta briefing. have, so conversation के लिए you need to listen to the kid. You need to listen, and you need to be genuinely interested in what your child is interested in. Yeah. If your child is interested in playing video games, ठीक है, अगर आपका Yeah. बच्चा इंटरेस्टेड है वीडियो गेम्स में, आप अगर हर दफा उसके साथ फड्डा कर रहे हैं इस चीज पे कि तुम सारा वक्त अपने गेम्स पे होते हो और सारा वक्त तुम करते हो, बट आप उठा के उसके साथ गेम नहीं खेलते, आप उससे पूछते नहीं हो उस गेम के बारे में, आप ये नहीं पूछते कि तुम क्यों इंटरेस्टेड हो इस गेम में, तुम क्यों, व्हाई डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम, एंड जेन्युइन क्यूरियोसिटी। ये नहीं कि आप पॉइंट्स लिख रहे हैं कि मैं ताना इसको मारने के लिए. ताना हाँ. फ्यूचर में नहीं, it's हाँ. genuine, it's a genuine place. When you start from that place, because unfortunately Urooj, for many of us, हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, एंड मोस्ट पेरेंट्स, आई वोंट से ऑल, मोस्ट पेरेंट्स स्पेशली हमारी जनरेशन में जो रेज हुए थे, they came from a position of like them and us, यानी and कि many of us, आप अलग हैं और मैं अलग हूँ. and we are following that pattern still. Yeah. But at that time it was may have worked for some people, although मेरी argument है कि काफी लोगों के लिए नहीं भी work किया, हाँ. लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब because of access to media, Yeah. it is only going to push our children into numbing their feelings further and further, and as they grow into adolescence and teenagers and adulthood, it will push them into more risky behaviors. Yeah, तुमने web and us बोला ना, तो मेरे दिमाग में This Is Us आ गया, and I thought like wow, what I love that show, and I think but and उससे मैंने फौरन क्लिक किया कि
this is us. Like, I think you've got to go from you and me, yeah, them and us, to this is us, we are us, we are we. और होता है, माँ बाप करते हैं. I mean, as we close in the last 10 minutes, well, अगर हम थोड़ा घंटे से ऊपर जाएं तो, कि मायरा, like, all this is जो माँ बाप सुन रहे हैं, and I really want to say माँ बाप, guys, it's not a woman's job to do all of this. I think it's the parents' job to do all of this together. Talk a little bit about that. And also, I almost feel like extending a hug to the parent, because I know parents today are torn. क्योंकि like you said कि हमारे माँ बाप ने, और हम तो, मैं तो अपनी जनरेशन को बोलूँगी, हम बड़े लकी थे कि हमारे माँ बाप फिर वो एम्पावर, थोड़े से लाइक इमैन, थोड़े से लाइक उनका दिमाग खुल रहा था, वो चीज़ों को चैलेंज कर रहे थे. और मेरी अम्मा जब मुझसे कहती कि भाई हम फंसे हुए थे, हमने तो, हमारे अम्मा डंडे मारती थी, हमें बच्चों को मोहब्बत देनी पड़ती थी, तो हमने तो, like, we never got the power, we didn't get the power as kids, we didn't get the power as वो. And I feel like all generations ये सोचती हैं, लेकिन I really Hmm. feel के है. मगर generally speaking, एक जो generation से आ रहा है, जो कि आसान था, जूता कल्चर, चप्पल लगा दो, थप्पड़ लगा दो, अब माँ बाप से ये टूल्स, मीडिया अवेयरनेस छीन रही है. एंड माँ बाप के अंदर एक बेबसी दिख रही है कि यार मैं क्या मोहब्बत दूँ तो बच्चा बिगड़ जाए, डांटूँ तो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाए. सो I just want you to talk to the mother and the father, just generally say, like, how to uplift and encourage and Yeah. So it's the hardest job in the world. ठीक है, and it's the only job in the world जिसमें आपको धक्का दिया जाता है और आपको कोई ट्रेनिंग, कोई डिग्री, कुछ नहीं मिलती है. आपको बोला जाता है कि फर्स्ट डे से you should have knowledge of how to get with it. And yeah, unfortunately, it's also trial and error. So much of this job, being a parent, is आपको constantly कुछ चीजें चल, working, and then कुछ time बाद वो बच्चा grow हो जाता है and it doesn't work and you have to change and evolve. So as a parent, completely, it's not easy. It is hard, especially now. And it is more than ever important कि अगर हम लोग अपने आप को refuel नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों को help नहीं कर सकते. You know that analogy that you have to put on the, हम जब fly करते थे, you have to put yeah. on the oxygen करते थे, mask. like करते थे प्री पेंडेमिक के पिछले जमाने Pre, में. जो एक कदीम जमाने में हम करते थे. That you have to put on your oxygen mask to be able to help out others. More often than not, हम लोग जब अपना lose करते हैं cool या feeling of control, और is because हम लोगों का tool box बहुत low होता है resources का, और हम लोगों की अपनी well-being जो है वो compromised होती है. Yeah. तो अगर आप अपने आप को नहीं रिप्लेनिश कर रहे हो, और आप अपनी सेहत और अपने खाने पीने का, नींद का, अपनी दिमाग और दिल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप किसी और का नहीं सोच सकते. तो इट बिगिंस विथ यू. Yeah, yeah. So, it goes back to, it's all about you. और आप, इवन दो आप पे इतना प्रेशर है कि आप परफेक्ट माँ बाप बने, मगर पहले आप अपना ख्याल रखना सीखें. अपने लिए समझिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपको गुस्सा कैसे आता है, आप कौन से इमोशंस फील करते हैं. एंड आई थिंक then you will automatically start giving out goodness, because you are the source, as एब्सोल्युटली. scary as it is. You are the, आप मतलब जिस प्याले से बच्चा पानी पी रहा है वो आप हैं. तो अगर आपके अंदर लाइक मिट्टी है, गर्द गुबार है, आपको आइडिया नहीं है, तो बच्चे को वही मिलता जाएगा, नो मैटर हाउ मच यू कीप क्लीनिंग द किड्स ग्लास. But when you start to work on yourself, and work means being nice to yourself, being good to yourself, being true to yourself. It just या doesn't mean कि आप classes लेते रहें और best mom और खाली workshops करते रहें, but also extend that love to yourself. या बिल्कुल. सेल्फ कंपैशन in this time, the fuel that we all need as parents most is self compassion. कि आप Yeah. अपने, अगर आपसे गलती हो गई, तो आपका जो इनर क्रिटिक है, अगर वो बहुत चिल्ला रहा है आप पे, आप फाइंड करें वेज ऑफ ट्राइंग टू टोन दैट इनर क्रिटिक डाउन. उसका एक फंक्शन है हमारी सबकी जिंदगी में. जो हमारा इनर क्रिटिक है उसका फंक्शन है, लेकिन कभी Yeah. कभार
वो थोड़ा ज्यादा बात कर लेता है, और Yeah. उसको आपको negotiate करना है कि how do I manage this, because we will all make mistakes, we're human beings. Yeah. So if we don't learn how to show that self love, self compassion, it's going to be a hard ride. Yeah. And it's so So true. key right now. मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास कितने पेरेंट्स अभी जो आ रहे हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, मैं उनसे पहला सवाल ये करती हूँ कि what are you doing for yourself? How are you taking care of yourself? And the जवाब आता है मेरे पास टाइम नहीं है, I have to do this, I have to do this. And I always say कि 24 घंटे में से you can take out 5 minutes for yourself. Yeah, it doesn't have to be half a day. मतलब ऐसा होता है कि हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है कहीं पे कि हमें नहीं अपने लिए टाइम निकालना क्योंकि हम मदर इंडिया हैं, तो फिर यू नो लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ गिल्ट कि मैं कैसे निकालूं, नहीं नहीं डिसमिस कर दिया, ज़रूरी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So Mahira, you are working at the school, but you also have an Instagram where you're trying to spread the word out, be accessible. You share amazing content. It's Vising Thank Along. you. मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आपका handle. Is there any other program that people can enroll that you're running? कोई और चीज़? So for our school, हम लोगों ने, and it was open for the entire community. It wasn't just limited to our school. We ran a lot of workshops, webinars for the past Yeah. like 5 weeks, in which we touched upon teens. And next, अभी Thursday को मेरी colleagues हैं वो एक और कर रही हैं on tweens, on moods, different moods that are happening in, you know, with the young people. If you're interested, you can send me a direct message, and I'm happy to send like links and video and content on that. And I'm sure कि in the future आता रहेगा ऐसा content around parenting, around self-care, around well-being and all that. So Exactly. So you have come here, you've shared, I want to say you've shared personal stories, which is very brave. Zara, agar dekh rahi hain to Zara ko bhi, you are a very brave girl, Zara, and there's so many girls like you, and hearing your example will give them a lot. So thank you for that. And Vising Along is Mahira's handle, Instagram page. I know she responds right away. Mahira, you have given us more than an hour. Thank you yeah, so you're much. welcome. Thank This you. I was would. lovely. Yeah. And we And hope that maybe, other questions aayenge, because of the beauty of doing this here is that it stays. We can share it, and then when people watch it, there's questions, we can always answer it. absolutely. Thank you so much for having me, Urooj. And I know that you are doing a great job with a million lives. I know, exactly. Weekends are live weekends. Yeah. Yes, that's a courtesy when you're not a parent, you can do that. Yeah. Well, I Yes. think that, yeah, I Yeah. guess. So But thank you you very take, much. Yes. thank you, and take care of yourself as well. And thank you for everybody who joined in. Yes. Thank you. Take care, Myra. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye.